what I love over here is now that every chicken is properly cooked. Hey foodies, welcome back to my channel. Thank you for your lovely response on my first video. I was really overwhelmed by it. So as you can see, I'm at one of the oldest places, not at all. So it's a 90s theme based restaurant and it's really amazing. So people, this is Isha introducing you to my channel for Isha. Let's go in. Okay, I'm not going anywhere. This is just a view of this restaurant. This is just amazing and you're gonna see very amazing cinematic shots of this restaurant. So people, please stay connected and enjoy the view. ओके गाइस, जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है. ऐसा मैं नहीं कह रही, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है. ओके, यहाँ पे बहुत अमेजिंग कोट्स लिखे हुए हैं विच आई एम गोना टेल यू फॉर श्योर. एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप लोग आओ यहाँ पे किले से इंजॉय करो, बहुत ही मज़ा आने वाला है. एंड ये जो फोटोजेनिक है, जिन्हें फोटो लेने का बहुत शौक है, उन लोगों के लिए प्लेस परफेक्ट है. सो गाइस, आपको सिनेमैटिक शॉट्स कैसा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स एंड टेल मी. ओके, एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद द शेफ अबाउट द डिश. ओके गाइस, तो शेफ़ हमें बताएंगे आज हमने क्या ऑर्डर किया है, ये इसकी क्या स्पेशलिटी है, इस रेस्टोरेंट में सबसे बेस्ट चीज़ क्या मिलती है. सो लेट्स, तो शेफ़ बताइए आप. ये हमारा सिग्नेचर डिश है शिकारी मुर्ग तावे का. ओके. और नेक्स्ट जो है ये चिकन मिर्च मसाला. ये दोनों हमारा सिग्नेचर डिश है. ये आपको थोड़ा स्पाइसी होगा. जो झारखंड के हिसाब से हम लोग बनाए हैं. ये हमारा होममेड मसाला है. होममेड मसाला, दैट्स ग्रेट. तो आप बता सकते हो आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली. हाँ, आप अपने सिग्नेचर तो बताओगे नहीं, बट स्टिल जो हमारा जो होममेड मसाला है वो है. उसका रेसिपी हम लोग आउट ऑफ किसी को बोलते नहीं है. वो हमारा स्पेशलिटी मसाला है. और इसके साथ में ब्राउन ग्रेवी है, थोड़ा स्पाइसी है. ये इसके अंदर अनियन है, कैप्सिकम है एंड चिकन. ओके. एंड इस डिश के बारे में आप कुछ बता सकते हो. चिकन मिर्च मसाला है, मेन इसका ब्राउन ग्रेवी बेस है, थोड़ा स्पाइसी है. ये भी हमारा सिग्नेचर डिश है. रेस्टोरेंट के हिसाब से चिकन मिर्च मसाला इसका नाम रखा गया है. तो दोनों डिश में डिफरेंस क्या है. ये आपको थोड़ा स्पाइसी मिलेगा, जो शिकारी मुर्ग तावे का है. और ये थोड़ा लेस स्पाइसी है. अच्छा, ये तवा पे, दैट मींस ये तवा पे बेक हुआ है क्या. ये तवा में रहेगा, थोड़ा स्पाइसी रहेगा. ओके पीपल, सो लेट्स ट्राई दिस शिकारी मुर्ग तवा. मैं बताती हूँ ये कैसा लग रहा है. ये देखने में सीरियसली बहुत अमेजिंग है. आई डिडंट हैव एवर दीज फ्लेवर्स ऑफ चिकन इन माई लाइफ एंड आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई टेल यू हाउ दिस लुक्स लाइक. अमेजिंग, मस्त से. उसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी है. मसाले परफेक्ट. स्पाइसेस मीन्स टेस्ट करने से ना वो सारे मसाले मुझ में टेस्ट लग रहा है उनका. So guys, in this proper mixture is combined in it. I'm just loving this dish. Properly cooked, crispy and juicy inside. Let's taste it. Wow, it's just amazing. I can cut it properly. It's so tasty, amazing. And what I love over here is now that every chicken is properly cooked and it's basically cooked in tandoori as told by chef. So it's just amazing and it's just wow to have it. इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स कोई भी जो चिकन है सब तंदूरी रोस्टेड है. कोई कच्चा चिकन नहीं है. अच्छा, ठीक है. सब तंदूरी रोस्टेड चिकन है. Okay guys, now I'm trying the speciality of this restaurant, that's Chicken Mirch Masala, and its name is also Mirch Masala, the restaurant name. I must say it has a little of butter taste. It's so soothy, it's creamy, so butter. Amazing, creamy inside. It's just awesome. Okay, thank you chef for this wonderful dish and your wonderful explanation. I didn't knew that, but the dish was really amazing. I would love to have it. Thank you.
Okay guys, that was an amazing lunch over here. I just loved it, and I just love the ambience over here, the presentation, the food we are served into. It was a copper plate, means it was healthy all over. And yes, so finally me and my tummy both are very happy and excited having this super delicious lunch. If you like the video, please hit the like button, and if you are new to the channel, please subscribe it. And yes, please drop your valuable comments, and if you are new on my channel, please subscribe it. Yes, don't you forget to follow me on Insta, because I keep updating the contents over there also. Till then, bye bye, take care, have a foodie night.